अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 10th क्लास के कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आपने इस चैप्टर के आखिर में आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं उनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। वाई डू वी नीड अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन CHAR एंड INT। इसके अलावा डिफाइन स्टेटमेंट, टर्मिनेटर, व्हाट इज मॉडुलस ऑपरेटर अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। इसके अलावा व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट, व्हाट आर नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, व्हाई डू वी नीड सिलेक्शन स्टेटमेंट। इसके अलावा डिफाइन डाटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज द यूज ऑफ नेस्टेड लूप, आइडेंटिफाई द एरर ऑफ द फॉलोइंग कोड, डिफाइन reusability, and list the part of the function. What is IDE? Write the steps to create a C program file in the IDE of your lab computer. How can we declare and initialize our variable? Find SCNF, which function of C language used to display output on screen. Differentiate between selection statement, what is sequential control आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। Identify the error of the following code, define function, write down the output of the following code. What is array initializations? Describe the structure of the loop. Identify the error in the following code, write down the output of the following code. What are built-in functions? What do you know about the return keyword? Define the function parameters. Identify the error in the following code. Segments. Find condition. Differentiate between sequential and selection statement. इसके अलावा आपने व्हाट आर रिजर्व वर्ड्स बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैनफ एंड कैच क्या है, ये क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। आइडेंटिफाई द एरर ऑफ द फॉलोइंग कोड, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसके अलावा बिल्ट इन फंक्शन, व्हाट डू यू नो अबाउट रिटर्न कीवर्ड्स, पैरामीटर का आपने फंक्शन अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 5 इज अ वर्ड इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट डाउन द रूल्स of the naming variables. Escape sequence क्या है, what is meant by the precedence of operator, which operator has the highest precedence in the C language, what is divide and conquer approach, variable declaration आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छे तरीके से याद करना है। इसके अलावा आइडेंटिफाई द एरर ऑफ द फॉलोइंग कोड याद करने हैं। लूप स्ट्रक्चर क्या है, नेस्टेड लूप क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट क्या है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। इसमें ज़्यादा प्रोग्रामिंग है तो आप प्रोग्रामिंग स्किप नहीं करनी। What is compiler? What are the types of the commits in C program? What is integer, INT? How we can initialize variable? What are the main parts of the scanf function? What are operator? Write down the basic operator of C language. What is if statement? What is the use of if else statement? Write down the output of the following code. ये आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा define data structure. Write most important property of an array. इसके अलावा आपने व्हाट इज द यूज ऑफ लूप स्ट्रक्चर, गिवन एग्जांपल याद करनी है। कोड टू एडिट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे हैविंग 100 एलिमेंट्स आपने अच्छे तरीके से याद करना है। यूज ऑफ फंक्शन याद करना है। रिटर्न कीवर्ड्स क्या है वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बॉडी ऑफ द फंक्शंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एफ और कैच के बारे में। एस्केप सीक्वेंस क्या है, टैब इन C लैंग्वेज के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। इसके अलावा सिलेक्शन स्टेटमेंट, हाउ वी कैन एसोसिएट मोर देन वन स्टेटमेंट टू एन इफ statement, what is common mistake in compound statement क्या है, what is the difference between array type and array size क्या है। character set in C programming language, what is linking section और header section, what is text editor क्या है, importance of variable declaration क्या है, कि why do we need IDE, what is the difference between real constant and character constants, formations of the escape sequence आपने याद करना है। इसके अलावा आपने which operator is applied on the 3 operands, define associated code, write name of selection statement types, define blocks of compound statement, differentiate between sequential and selection statement आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। How to access an array statement, what is data type, write down the method to initialize an array, difference between argument and parameters अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। Can there are multiple return statement in a function अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। Find sub program, write the use of medium resolution graphic mode, write the syntax and purpose of ABS function आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। Why does the syntax array occur? What is meant by text checking? What is loop control to structure used in basic? Write the purpose याद करना है for next loop. How does if then statement work in basic? Define nested loop. How we can fill an array? Write the use of subscript variable in array. What is meant by one dimensional array? Define numeric variable. How does direct mode work in basic? What is the use of assignment
ऑपरेटर, हाउ वी कैन फिल एन अरे। इसके अलावा लॉग फंक्शन आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। व्हाट इज मेंट बाय यूजर डिफाइंड फंक्शन अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। डिफाइन सब प्रोग्राम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। व्हाट राइट द सेंटेंस एंड पर्पस ऑफ एबीएस फंक्शन, पर्पस अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। राइट द सेंटेंस ऑफ पी सेट अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। डिफाइन एल्गोरिथम, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ द फ्लो चार्ट, व्हाट इज मेंट बाय कंट्रोल स्ट्रक्चर, राइट डाउन द सेंटेंस फॉर नेक्स्ट लूप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। Define keyword, what is the use of the input statement, what is meant by the type, declaration character, and define vector array, describe the use of array, how we can fill an array, how does if then statement work in basic। इसके अलावा आपने सब प्रोग्राम अच्छे तरीके से तैयार करना है। बिल्ट इन फंक्शन अच्छे तरीके से तैयार करना है। यूज़ ऑफ एबीएस फंक्शन याद करना है। स्क्रीन स्टेटमेंट आपने याद करना है। सेंटेंस ऑफ सर्कल स्टेटमेंट आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ कंप्यूटर के शॉर्ट क्वेश्चंस की गैस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आती होगी। आइमा महर को हैप्पी लर्निंग के साथ इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन का आइकन भी दबाइएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।